Hello, everybody. This is Vishu Rajpal from Vibe Adda. Your growth is our vibe. We turns imaginations into reality. So today we are back again with the topic, with a very interesting topic which most of us ignore because हम लोगों को उसका मतलब नहीं समझ में आता. Healthy teeth is healthy life. That's what we are going to discuss about. So before calling the person who is going to tell about it, I want to tell few things to you all. फर्स्ट इज जो अच्छी ओरल हेल्थ होती है, इट्स नॉट अबाउट अ ब्राइट स्माइल. सिर्फ हम स्माइल के लिए नहीं ये सब चीजें देखते हैं. व्हाट मैटर्स इज हमारी हेल्थ मैटर करती है. एंड टू नो ऑल अबाउट इट वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन जिससे हम ये बेटर नॉलेज ले सकते हैं. सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम. वेलकम डॉक्टर ईशा. Thank you for joining us. Please introduce yourself. Hi Vishu. Thank you for having me on the show. So I'm Dr. Isha Fegde. I have completed my BDS from BYL Nair Hospital Dental College. Okay. I've been working in Mumbai for the last 10 years, Wow. and I've been practicing in Dadar. Mm-hmm. So I'm here to share some tips related to oral health so that everybody can use them and have a better oral health. Correct, So correct. that's why I'm here. Okay, so Dr. Isha, what we basically do, these online, conversations and all about the surveys we do basically, okay? We do surveys with most of the people here, and then according to the surveys and request, हम ये एक live session लेके आते हैं जिसमें हम उन सब लोगों को आंसर कर सकें जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो आई हैव फ्यू क्वेश्चंस जो मेरे पास उस सर्वे में आए हैं, जो मैं आपके सामने भी रखना चाहती हूँ सो दैट मैं उन लोगों को आंसर कर सकूं जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. शैल वी? Yes, of course. Okay, so my basic problem is, what is the most common problem that people face? We are talking about dental problems. So, what is that most common problem which actually people face? Okay. So the most common problem that people face is of plaque and tartar. So Okay. plaque, tartar, and bad uh, bad breath. These Okay. are the most common problems that people have. Apart from Mm-hmm. that, there are other problems that are relatively more common, such as decay. So, tooth Mm-hmm. decay is another common problem. So, for these common problems, there are different types of treatments that are available. Mm-hmm. So, for something like plaque and tartar, we have a regular cleaning session that we call scaling and polishing. So, Okay. we advise every patient to undergo scaling and polishing once every year. And for people Okay. who don't have that much problem of tartar, Mm-hmm. we advise them once in every, say, 1.5 year. And people who have Mm-hmm. more of it, we advise them once in 6 months. So, Okay. depending on the patient, we customize every treatment plan. ओके ओके. सो व्हाट आई हैव सीन इज, किसी के पेट में दर्द हुआ तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआईज करा लिए. कुछ प्रॉब फीवर हुआ तो ब्लड टेस्ट करा लिए. बट आई हैव सीन पीपल इग्नोरिंग डेंटल हेल्थ. पीपल डोंट अनटिल अनलेस, मतलब वो कहते हैं ना, जब अति नहीं हो जाती है, नोबडी केयर्स अबाउट द डेंटल हेल्थ. सो Yeah. व्हाई डू पीपल इग्नोर डेंटल हेल्थ? So, see, there are many reasons why people ignore dental health. A lot of it is because of the fear of Mm-hmm. dentists. But I would like to tell you that now dentistry is relatively painless. Like it's kind of painless. The other reasons why people don't seek help is because it doesn't pain, like you said, it doesn't pain. And a lot of times dental problems don't give people a lot of trouble till it's already very late. Okay. So a lot of times people have complaints like pain and swelling in very, later stages of the disease. Okay. So generally they come to us till it's already very late, you Mm-hmm. know Okay. so
That is one of the reasons why people delay dental treatment. Another reason is obviously the cost, because Okay. insurance doesn't cover it. Yeah, So that's true. insurance doesn't cover it. Mm-hmm. So that is another reason why people delay dental treatment. Correct, correct. So is tooth pain the first sign of any problem which we can face in future? Means is it the first step? No, usually it comes very late. Like Mhm. usually tooth pain can be, can, like I said before, um, tooth toothache can come like really in the later stages of the disease. Before Okay. that, people generally have minor complaints like tooth, like food getting stuck in the tooth. Like these are Okay. all minor complaints which usually people ignore or neglect. Okay. You know कि अटक रहा है, अटक रहा है, अटक रहा है, लेकिन चल रहा है, Correct. चल रहा है. So Mm-hmm. these are like small signs that people ignore. And Okay. see, food getting stuck in between teeth, that means there is a cavity. There could Mm-hmm. be a Acha. cavity. I'm Okay. not saying there Okay. is, but there could be a cavity. You need to get it checked. So Okay. And if we talk about dental visits, how frequent it should be and how regular, a person should be for the dental checkups. so we recommend people to come in for a dental checkup once every 6 months, Okay. and if not once every 6 months, then at least once in a year. Okay, Okay. and for people who've undergone a lot of dental treatment, like people who have a lot of fillings, who have a lot of caps, who have implants, for them we try to schedule checkups more frequently, like maybe once in 4 months or once in 3 months if they require it. Okay. Apart from that, if you just have like good teeth and more natural set of teeth and just a few fillings or something, then once in every 8 to 12 months is fine. Okay. And one more thing, Dr. Risha, we are not promoting any doctors here or anybody means कि पेट दर्द हुआ तो ये doctor वो doctor. We are not promoting any doctors here. So one thing I want to tell my audience and I want to ask you, is it because क्या dentist हर 6 महीने में regular checkups के लिए बोलते हैं कि उनका कोई फायदा होता है या it is for us? It is for the patient. Okay, like Mm-hmm. I said, like some, like the earlier the disease is caught, the better we can treat it. The Mm-hmm. better is the outcome of the treatment. Like if the patient complains of food lodgement in the teeth, then maybe we can do a small filling and fix it there. Okay, a small filling, like a small cavity, can take up to 5 to 6 months to develop. Okay. So a new cavity can form in 6 months. So Okay. that is enough time for a cavity to form. So that's why we schedule it every 6 months, so that we can catch a cavity early, to treat it early, so that the outcome of the treatment is good. Okay. That's why we want patients to come frequently. Unless a patient has like good teeth overall, then we recommend once a year. ओके और अगर कोई फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के पास जाता है तो उसका उसको क्या बेनिफिट हो सकता है एंड हाउ डज फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेशेंट्स टीथ लुक लाइक मींस हाउ अ फिट एंड फाइन टीथ और द माउथ इनसाइड फ्रॉम इनसाइड लुक्स लाइक मतलब जो जो रेगुलर चेकअप्स लेता है एंड ऑल उसको क्या बेनिफिट मिलता है दैट्स व्हाट आई वांट टू नो सो जो रेगुलरली चेकअप्स के लिए आते हैं, उनको इन जनरल टीथ के प्रॉब्लम्स बहुत कम होते हैं. सो जनरली कैसा रहता है कि जितना कम ट्रीटमेंट होता है, जितना ज्यादा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ टीथ यू आर गोइंग टू हैव. ओके, जितना ज्यादा ट्रीटमेंट होता है, ओके that is where the problem comes. Okay, so we want to ओके do more preventive treatment.
ओके, सो द Okay. जो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं चेकअप्स के लिए, उनमें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ज्यादा होती है, लाइक Okay. क्लीन हो जाए या कुछ ऐसा, Mm-hmm. लाइक स्मॉल कैविटीज। तो वो जो छोटे छोटे जो जल्दी कैच हो जाते हैं, जो अर्ली स्टेजेस में कैच हो जाते हैं, तो दोज पीपल जनरली टेंड टू हैव बेटर टीथ and a better Okay. oral health. They have less bad breath. They have less overall complaints, with with Okay. their teeth. So that's Okay. And what happens if a person is dealing with dental visits, तो उसके साथ क्या हो सकता है? Because I have seen people saying no pain means कुछ दिक्कत नहीं। अरे मुझे कभी पेन ही नहीं होता, मैं आइसक्रीम खाता हूँ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं होता, मतलब मेरे टीथ तो बराबर है, मुझे डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज द वेरी frequent line most of the people say, and especially many of last generation people, हमारे yeah. पेरेंट्स, हमारे, है ना, वो लोग तो, उनकी तो ये फेवरेट लाइन है, बिकॉज वो लोग सोचते हैं कि ये सब तो बेफिजूल के खर्चा है, एंड एवरी ऑल सच थिंग्स, सो नो पेन मीन्स नो प्रॉब्लम, इज दैट ट्रू? No, not at all. In fact, now, see, for so many years, I've seen, such people, they don't seek help because it's not paining. But in the end, what they are left with is they have a very bad set of teeth, which are all broken down. They don't have any pain, they don't have any direct complaint, but they also complain that they can't eat after a point because the teeth, they've lost teeth, the teeth are all broken down, and then they come to us saying कि अभी दांत निकाल के लगवा दो, दुखता कुछ नहीं है लेकिन दांत निकलवा के लगवा दो. So that करेक्ट. time it's very difficult for us to explain it to them that if they would have come earlier, okay, we would have been able to preserve their natural teeth, which I'll we tell you can't this do thing now. with my example only. I had a problem with my wisdom tooth. अब हुआ ये कि मुझे ना, वो जब वो मशीनें आती हैं एंड घूम ऐसी आवाज आती है, मेरा तो बस वही, मुझे एक फोबिया है, डर लग जाता है. सो आई वॉज एक्चुअली अवॉइडिंग, कब से, वो कोविड पे, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, एंड माय डेंटिस्ट सेड अरे अभी तो होली है, गुजिया खाओ, उसके बाद आना, उसके बाद कोविड हुआ, एंड आई वाज कंटिन्यूअसली अवॉइडिंग. छोटी सी कैविटी थी, शायद फिलिंग से ठीक हो सकती थी, है ना, बहुत छोटी सी कैविटी थी, एंड आई वॉज अवॉइडिंग. आज ऐसा हो गया है कि उसमें इम्प्लांट होने की नौबत आ गई है. माई 2-3 days बैक ओनली आई विजिटेड माई डॉक्टर एंड ही सेड इम्प्लांट करना जरूरी है. सो दैट्स व्हाट आई इवन वांट टू से कि येस, इवन आई हैव एक्सपीरियंस्ड, हम छोटे छोटे डीलेज जो होते हैं. सो इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आई सेड, हमने बहुत सारे सर्वेज किए हैं, उन सर्वे में कई लोगों ने ये भी बोला कि डेंटिस्ट तो हर 6 महीने में इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनकी फीस बने. ठीक है. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्या रेगुलर चेकअप्स हमारे पैसे बचा सकते हैं? Actually बचाएंगे, because you, like I said, preventive treatment is actually cheaper than the actual treatment. मतलब अगर कैविटी फिल हो जाती है, फिलिंग से काम बन जाता है, तो वो रूट कनाल तक की नौबत ही नहीं आती है. रूट करेक्ट. कनाल ज्यादा महंगा है. रूट कनाल के बाद कैप भी डलवानी पड़ती है, वो ज्यादा महंगी है. तो फिलिंग काफी सस्ती है उससे. ट्रू ट्रू. और अगर और भी लेट आए तो उसके बाद तो दांत निकलना ही है, तो निकलने के बाद इम्प्लांट लगाना है, तो वो तो और भी महंगा है. करेक्ट. तो इसकी वजह से जो फिलिंग से काम हो रहा है उसको चला चला के वो इम्प्लांट तक की नौबत जो लाते हैं ना, दैट इज स्टुपिडिटी. करेक्ट. Correct. I agree. And chalo, let's talk about daily oral care. How we can, take care of it. So my question, one of the major question which we were facing is, what is the correct way to take care of your teeth? Means हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम daily अपने दांतों का ख्याल रख सकें? So, uh, brushing twice a day, once in the morning and once at night. Okay, brushing twice a day is, you just can't negotiate. Okay, it's non-negotiable. You have to हम्म. brush twice a day. Okay, तो so ये the ट्वाइस अ डे उन लोगों को भी करना है जो कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारे दांतों में तो दर्द ही नहीं होता?
It's for everyone. It's for everyone. In fact, for people Okay. who have a lot of fillings, a lot of caps and all that, we recommend that you brush once without toothpaste after lunch also, because Okay. बहुत खाना फंसता है, you know, when Correct. you have implants and everything, खाना बहुत फंसता है, and like proper cleaning is mandatory in such patients, because otherwise it's very difficult, because फूड लॉजमेंट ज़्यादा होता है, जिन लोग के पास ऑलरेडी बहुत कैप्स या इम्प्लांट्स होते हैं, उनमें फूड लॉजमेंट ज़्यादा होता है, तो उनके लिए वी रिकमेंड दैट दे ब्रश ट्वाइस अ डे, and also floss. Okay, so Okay. that I recommend that everyone uses a water flosser. um, it's absolutely mandatory for people who have implants and braces and everything else, and for people who have more natural teeth, they should brush twice a day and also floss if possible. Water flosser every night after brushing can give you the best results. Okay. So, like you said, means only brushing is not alone enough for dental care. We need to take care of other things also. हमें जो है floss भी करना चाहिए. That's what you want to say, right? Yes. Okay. And coming to foods, हमें क्या food खाना चाहिए, क्या avoid करना चाहिए? So खाने में जैसे सी सो टीथ में जो डीके होता है, जनरली कॉज्ड बाय शुगर. ओके, Okay. सो Okay. शुगर जब फर्मेंट होता है मुंह में, Mm-hmm. तब वो Mm-hmm. एसिड बनता है, एंड एसिड Okay. अटैक्स द टूथ. Okay, so अच्छा. basically you have to cut down on everything that has sugar in it. Okay, Okay. so शुगर तो एक तो डायरेक्ट शुगर जो टेबल शुगर होता है वो तो है ही, उसके बाद जो हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स है जैसे ब्रेड्स, बिस्किट्स and other bakery items, Mm-hmm. they you have to reduce that also, Okay. and you can include a lot of fruits and vegetables in your diet. Okay. Okay, that and something that has a lot of fiber. Okay. So a high fiber diet is very good for teeth, and Okay. something that sticks to the tooth like biscuit, or any other kind of bakery items, cakes and all those things, Okay. they can increase the rate of decay in your mouth. Okay. So we always recommend people to have a high fibrous diet. It is Mhm. very good for their teeth, Okay. and to cut down on sugar as much as possible. Okay. And coming to the most common problem जो actually लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि they have some issue in their mouth which that is bad breath. So what are the causes of bad breath? I want to know that. So there are a lot of causes for bad breath. Mostly it is because of the local causes, local factors. So local factors include like I just mentioned, tartar, yeah, Mm-hmm. decay, Mm-hmm. caries, and there are other factors also that can cause bad breath. It could be Okay. because of sinusitis. It could be Okay. because of a bad tummy, you know, Okay. throat infection, any other kind of ENT infections. So Mm-hmm. all of these can cause a bad breath. So you first Okay. have to find out why do you have the patient is having bad breath. Okay. Mostly things improve after a simple cleaning session, Okay. but you first have to investigate why the patient has bad breath, and only then you can target it and treat it. Okay. Okay. And what about the bleeding gums? For bleeding gums, it's 90% it's plaque and tartar, Okay. plaque and calculus. So a simple cleaning session helps in those patients also. But Okay. there are a lot of other patients who have diabetes, and
some elderly women can have uh, bleeding gums because of hormonal issues. So Okay. there are other conditions also where patients can have bleeding gums. Okay. Vitamin C deficiency is very rare. That's very Okay. rare. A patient can Mm-hmm. have bleeding gums in those cases also, but it's very rare. But Okay. like I said, 90% it's plaque and tartar, and simple cleaning session helps these patients. Okay. एंड व्हाट अबाउट पीपल लाइक मी जो डेंटिस्ट के पास जाते ही डर की वजह से नहीं है. हाउ कैन पीपल ओवरकम देयर फियर ऑफ गोइंग टू डेंटिस्ट? So it's actually, like I said, now dentistry has become so painless. Like we are we use local anesthesia for every patient, like for Okay. scaling or just a filling. So अभी अभी कोई भी ट्रीटमेंट विदाउट लोकल एनेस्थीसिया होती ही नहीं है. So the Okay. pain is not something that you have to be worried about. you Mm-hmm. know it's become very easy, it's become very comfortable. Okay. So it's really not painful anymore. ओके. एंड कमिंग And टू द पार्ट, ये तो हम बड़ों की बात हो गई. अगर हम बच्चों के ऊपर आते हैं तो जो न्यूबॉर्न्स हैं, अगर हम वहां से स्टार्ट करें तो एक बच्चे को सबसे पहले डेंटिस्ट के पास कब लेके जाना चाहिए? जो बेसिक कंसर्न होता है, क्योंकि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अभी तो हमारे बच्चे के सिर्फ गम्स ही स्ट्रांग नहीं है, वीक है या जो भी है, एंड जब उसके दांत आएंगे, कोई इशू होगा, तब हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे. इज इट सो, या एक पर्टिकुलर टाइम है जो हमें पैदा होने के बाद बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए फ्रीक्वेंटली? so एक जब फर्स्ट टूथ इरप्ट होता है, that time should be the baby's first dental visit. That time जब पहला दांत आता है तभी फर्स्ट विजिट होनी चाहिए, या फिर एटलीस्ट 1 ईयर, फर्स्ट बर्थडे तक. जब 1 ईयर का बेबी कंप्लीट होता है, दैट टाइम कुड बी योर फर्स्ट डेंटल विजिट. एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? मतलब इतनी जल्दी बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाने की क्या ही जरूरत है? मतलब कुछ इम्पोर्टेंस है या बस ऐसे ही डेंटिस्ट को फीस देने के लिए सो चले जाओ? मिल्क टीथ जो आते हैं, सो हम्म. they they kind of maintain space for the permanent teeth to come. Okay, ओके. so milk teeth are very important, and it's important that they stay in their place till it's time for the permanent teeth to come out. Okay, ओके. so milk teeth have to stay their entire course, like for whatever year every milk tooth they guide the permanent teeth to erupt. So it's important that they stay for those many years, because if the patient loses their milk teeth early, there are chances that the patient may have problems with their permanent teeth. Like ओके. any infection to the milk tooth can cause some, like orange brown spots on permanent teeth. They're ओह. called ओके. yeah, they're called hypoplastic teeth. Okay, ओके. and these teeth are more prone to decay because they're ओके. not formed only correctly. आई गॉट इट. जब तुम्हारा दांत इन्फेक्ट होता है, मिल्क टूथ जब इन्फेक्ट होता है, उसके नीचे परमानेंट टूथ बड रहता है. तो जब भी तुम्हारा मिल्क टूथ इन्फेक्ट होता है, तो चांसेस है कि तुम्हारा परमानेंट टूथ बड खराब हो जाए. तो ओके. वो फॉर्म ही बराबर नहीं होता है दांत नीचे. ओके. ओके. तो जब वो इरप्ट होता है, हम्म. तो उस पे वो दिखने में भी अजीब लगता है. इट डजंट इवन लुक अ लॉट. इट हैज they have some brown orange spots, and they sometimes are sensitive, so that when the ओके. patients, these teenagers, when they come to us, they say कि ये सड़ा हुआ ही आया. So it's very difficult ओके. to explain it to them कि शायद ये जिसके ऊपर जो मिल्क टूथ था वो खराब हो गया था. खराब हो गया था. You टेक didn't इट care to आउट. show it to us, and that is why अभी जो हाँ. permanent आया है वो orange आया है. And that ओके. tooth a lot of times is sensitive,
and of course it's more prone to decay. So we tell the patient कि उसका भी ख्याल रखो वरना ये जल्दी सड़ जाएगा. Oh, yes, yes, yes. And मैंने एक और चीज भी देखी है, being a mom, I noticed one thing also. Like मेरे साथ हुआ, I am very much, having a fear of dentist, going to dentist. वो जो instruments का sound होता है ना, उसी से मैं तो भाई faint भी हो सकती हूँ, इतना talent है मेरे अंदर, ठीक है. But you know what I did is somebody told me that you should take your daughter frequently to dentist, and I started taking my daughter to dentist every 6 months. Okay, from the time she was born, like 1 2 years से we started. So now अगर हम दोनों dentist के पास चले जाएं तो वो तो मजे से ऐसे बैठ जाती है, and when it comes my turn she's like, mama relax, mama relax, mama relax, take a deep breath, mama relax. So that's what it happens. तो मुझे ऐसा लगता है कि healthy habits को हमें zero से start करना चाहिए, instead of Yeah, waiting to go 40 and then starting them out. yeah. So Dr. Isha, what message you want to give to people, that you see many people, आप बहुत सारे लोगों को डेली देखते हो, उनकी प्रॉब्लम सुनते होगे, तो ऐसा क्या मैसेज आप देना चाहते हो लोगों को जिससे वो अपनी डेंटल केयर के बारे में सोचें, चाहे वो किसी भी जगह से वीडियो देख रहे हों, बी इट एनी सिटी एनी स्टेट, ठीक है, लेकिन आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो जिसके बारे में वो फोकस करके अपने अंदर कुछ चेंज ला सकें? सो मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डोंट इग्नोर योर डेंटल प्रॉब्लम्स, बिकॉज dental problems are often progressive. Okay, Mm-hmm. there's there is no cure. Okay, there's no Okay. cure for dental diseases. Now अभी जैसे आई साइड की एक बार दांत जो सड़ गया वो सड़ गया. Correct. Once it the tooth decays, it has decayed irreversibly. You can Correct. only remove the decayed part and fill it. Correct. You can't bring back the natural tooth. You can't Mm-hmm. bring back that part of the tooth which is rotten. True. There is no way you can do it. So a decay is always progressive. So at Mm-hmm. whatever level you are at, no Mm-hmm. matter how much fear you have, just go to the dentist and get everything treated. Because this, Okay. if this is the best time, agar Mm-hmm. you waited for so long out of fear or whatever reasons, for whatever financial reasons, this is the best time, because इसके आगे और वेट करोगे तो it is just going to get worse. यो तुम्हारा Mm-hmm. बिल भी ज्यादा आने वाला है. The treatment plan will become more complicated. So at whatever stage your dental problems are at, this is the best time to go to the dentist. Okay, yeah, agree. So I will also say to my audience with my experience, please visit your dentist regularly, because जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटी सी फिलिंग जो शायद कुछ हजार या less than 1000 कुछ सिटीज में हो जाती, मतलब छोटी सिटीज में तो less than 1000 में भी फिलिंग हो जाती है, उसमें भी हो जाती, ठीक है. उसके बाद वो रूट कैनाल पे आई, रूट कैनाल पे मुझे बहुत डर लगा कि रूट कैनाल भी होगा, लाइक शी सेड कैप भी लगेगा. करते करते ये हाल हो गया कि वी हैव टू टेक दैट टीथ आउट, उसमें मुझे कितना पेन हुआ, बहुत ब्लीडिंग हुई, बहुत कुछ हुआ. एंड नाउ इट्स बीन ईयर्स आई एम इग्नोरिंग दैट. सो नाउ डॉक्टर हैज सेड भाई अब तो तेको प्लांट भी कराना पड़ेगा. सो अगेन सेम प्रॉब्लम, मतलब मेरे फियर ने मेरा खर्चा तो मे बी 500 से 25-50 हज़ार तक लेके जा ही रहा है, but with the same thing pain is also increasing. So I request you all to visit your dentist frequently. Thank you, Dr. Isha, for a wonderful session, for amazing information you have given to people. We would love to hear you again very soon. Thank you. Thank you. Yeah, thank Thank you for you. having me, Vishnu. It was wonderful to talk to you. Same here. Thank you so much. Bye. So we were here live with Dr. Isha. Thank you everyone for watching us. Once again, I request you all to go to your dentist regularly. Once in 6 months, you should go. It doesn't take anything. ज़्यादा क्या ही जाएगा, 500 1000 रुपए की जो फीस जाती है वही तो जाएगी. अगर आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो आप बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन. We will see you soon with our next topic in our next video. Thank you. Bye bye.